Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Enchanted Learning Palace. Unlock your English potential at the Enchanted Learning Palace where words come to life. Welcome. Let's begin. So I'm gonna start my lecture from language skills. So language an integral component of communication. You know very well, without language no communication can be processed. So language is a part of communication. So language should be a integral part. So here we have four essential language skills. Uh, you know, listening, speaking, reading, writing. Okay, listening is your input, whereas if you are the good listener, it will be your input, and when you will speak, it will be your output. Same like if you are a good reader, it will be your input, and when you will write it, it will be your output. So these are the things, these are the four skills of language which is very necessary, and the five skill is about to be announced in future. It will be your thought. ओके, लैंग्वेज स्किल जो है ना वो एक अहम हिस्सा है हमारी कम्युनिकेशन का। इसके लैंग्वेज के चार जो होते हैं वो स्किल्स होते हैं जो अहम ज़रूरी होते हैं। जैसे लिसनिंग है, अगर हम अच्छे लिसनर होंगे तभी हम अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। लिसनिंग जो है हमारी इनपुट है, जबकि स्पीकिंग जो है हमारी आउटपुट है। इसी तरीके से अगर हम अच्छे रीडर हैं तभी हम अच्छे राइटर बन सकते हैं। ओके, कम टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप। सो यू नो, language is very important. Through language we can lead anyone. Come to next slide. Listening and speaking. How you can improve your listening and speaking. Language skills are related to each other. If you are as I told you before, if you are the good listener, then you can be the good speaker. Difference between hearing and listening. Active listening. Okay, if you are just listening, if you are just hearing the sounds and you do not getting, if you are hearing the sound and you are not getting the meaning, what is being spoken in front of you, it means you are just hearing. If something is being spoken in front of you and you are understanding, it will be your active listening. Speak clearly, concisely, without hesitation. Reading, develop an understanding, take notes, draw conclusions. Writing, succinct, clear and concise. तो लैंग्वेज स्किल्स जो है ना ये एक दूसरे से मिलती जुलती है। अगर हम अच्छे लिसनर होंगे तभी हम अच्छे स्पीकर होंगे। अच्छा, इधर डिफरेंस है हेयरिंग और लिसनिंग में। अगर आप जस्ट सुन रहे हैं और आप समझ नहीं रहे तो इसका मतलब है आप जस्ट हेयरिंग करें। अगर आप जो सुन रहे हैं आप उसको समझ रहे हैं तो ये आपकी लिसनिंग और ये एक्टिव लिसनिंग कहलाएगी। इसी तरीके से जब आप बोलें तो आप बिल्कुल क्लियरली बोले, कंसाइज बोले, छोटे छोटे सेंटेंसेस इस्तेमाल करें बोलते हुए प्रैक्टिस में। और जब आप पढ़ रहे हो तो आप ना चीज़ों को समझें, उनके नोट्स बनाएं, उनके कंक्लूजन निकालें। और जब राइटिंग करें तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए। ओके, कम टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. So we will summarize our language skills. We have four language skills: reading, writing, listening and speaking. If you are a good listener, then you can become a good speaker. If you are a good writer, good reader, then you will be a good writer. So pronunciation, learn to say a word correctly. Spelling aren't helpful to say a word correctly, courageously. Use a dictionary to listen to pronunciations. Merriam-Webster, listen to talks. Record yourself. Sociology, calcium, magnificent, data, and speak out loud. All these are the things through which you can improve your listening skill, your speaking skill. Sorry. So everything requires some practice. Without practice you cannot be a good speaker. So make practice. I have added in my coming lectures, I will give you some notes, then you will make practice over them, and it will improve your listening, your speaking skills. So learn to say a word correctly. Now we are living in a digital world. When we find any word difficult, difficult in the way if we don't know the meaning of that word, so we should search it on the Google. And there is also a sound there. You can press press on that sound, then it will pronounce, and it
and the transcription is also given below. You can also take a look at there. ओके, अगर आपको प्रोनाउंसिएशन सीखनी है तो आपको इन चीज़ों पर अमल करना होगा। आपको डिक्शनरी जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी उन लफ्ज़ों के लिए जिनका मीनिंग नहीं आता। जैसे यहाँ पे मरियम वेबस्टर लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी डिक्शनरीज़ हैं। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपके सामने वो आ जाता है, तो आप डिक्शनरीज़ आ जाती हैं, तो आप उनके ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में वहाँ पर ना लफ्ज़ों के साथ प्रोनाउंसिएशन भी दी होती है, माइक होता है उधर बना हुआ ना, उसके ऊपर ओके करोगे तो आपको उसके साउंड की सही प्रोनाउंसिएशन भी बताई जाएगी। सो तो आपको क्या करना है, आपको रोज़ इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से आ जाएँ। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, द स्ट्रेस वर्ड्स record. When we are pronouncing, we are gonna pronounce the word noun, we will give the stress on the first syllable of the word. Like here, record, it has two syllables, we will give stress on the first syllable, record. And when we pronounce it as a verb, we will give stress on the second syllable, record. Same like noun, present. When we are gonna speak the word present, we will give the stress on the first syllable. Okay, now when we gonna pronounce the word as a verb, so we will pronounce it present, rebel, rebel. So these are the things here we have stress. तो स्ट्रेस वर्ड्स उन्हें कहते हैं जिनके ऊपर हम दबाव देते हैं। जैसे कि इधर एक लफ्ज़ है, अगर वो नाउन के तौर पे होगा तो हम उसके फर्स्ट सेलेबल पे देंगे स्ट्रेस, और सेकंड पर नहीं देंगे। इसी तरीके से अगर वो वर्ब होगा तो हम उसके सेकंड सेलेबल पर स्ट्रेस देंगे। तो इसमें यही है, और ये हमारी प्रोनाउंसिएशन में बड़ी इम्प्रूवमेंट लाता है अगर हम इसको फोकस रख के बोलें। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी क्रूशल if you want to speak, if you want to do, if you want to achieve something in your life, you should have a good confidence. Don't be afraid of making mistakes. This is the first thing. Many people, what they do, they always make mistakes and they fear, and they don't do that work again due to mistakes. So you should know mistakes are a part of your learning, a part of your success. Don't be shy while learning. Okay, whenever you are learning, which thing you are learning, don't think about shyness. Just be confident on yourself, don't be nervous, and find someone to talk to. You should have a community, you should have a good friends who are also keen in learning English language, so you can speak with them, you can communicate with them. In this way you will make more practice and you will learn a lot, and it will also give you more confidence to speak. Okay, here I have 10 improve confidence, 10 tips to improve confidence. Stop comparing yourself to others. Okay, if you want to improve your confidence, don't think about of others, just think about of yourself. What are you, what you wanna be, and you will do your work and you will make efforts to improve yourself. Surround yourself with positive people, always make positive friends. They will give you, they will motivate you, they will not laugh at your mistakes, they will guide you. These are positive people. Be kind to yourself, always be kind. Don't think yourself that you are superior to other. Practice positive self-talk. Okay, always make practice. You should stand in front of a mirror and you can speak with yourself, and you can read a topic and you can speak with yourself in front of a mirror and summarize it. Try to summarize that topic in your own words. Set realistic goals. Always set realistic goals. Okay, your goal should be based on some calculated time. It does not be based on a lot of time. Like many people want to learn English language and they make their plan to learn the language in 1 year, and in this way they don't make practice, and they can't learn as a result. तो इधर 10 टिप्स दूंगा मैं आपको इम्प्रूव करने की, कि आप अपने आप को कभी दूसरे से कंपेयर ना करो, हमेशा अपने मेहनत करो, खुद को खुद से देखो, और हमेशा पॉजिटिव लोगों से अपने साथ रखो जो आपको मोटिवेट करे, आपकी गलतियों पे हंसे ना, और हमेशा हमेशा काइंड रहो। ये अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाओ, अच्छे इंसान बनो, और हमेशा प्रैक्टिस करो बोलने की। खुद से बोलो, मिरर के सामने खड़े होकर कोई भी टॉपिक पढ़ लो और उसको इंग्लिश में खुद से समराइज़ करने की कोशिश करो मिरर के सामने, और अपने गोल्स जो हैं वो रियलिस्टिक गोल करो।
अपनी प्लानिंग करो कि मैंने इतने महीने में इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। So come to our next slide, confident people and insecure people. I'm gonna give you the traits, characteristics of the confident people. Celebrate other people's success, open-minded, optimistic, willing to take risks, laugh at themselves, decisive, always learning and growing, admit mistakes, accept responsibility. Okay, जब आप एक कॉन्फिडेंट पीपल की करेक्टरिस्टिक देखते हैं तो वो क्या होता है, वो हमेशा दूसरों के सक्सेस को कामया को सेलिब्रेट करते हैं, ना कि उनसे जेलस होते हैं, और खुद को पॉजिटिव एक वो देते हैं कि हमने भी अपने आप को चेंज करना है। ओपन माइंडेड होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और हमेशा वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, और वो अपनी ही गलतियों पे खुद हंसते हैं और ना आगे हार मानते हैं, और डिसीजन लेते हैं, और हमेशा वो सीखने के लिए तैयार रहते हैं और ग्रोइंग होते हैं, और वो अपनी मिस्टेक्स को मानते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो कबूल करते हैं। सो इनसिक्योर पीपल आर जज एंड आर jealous ऑफ अदर्स, ऑफ क्लोज माइंडेड, pessimistic, afraid of change, hide flaws, indecisive, act like a know it all, make excuses, blame of others. They always judge others. They are close minded. They don't have a thinking to do something better and something creative. They are always jealous of others. Okay. They are pessimistic. They think negative always. Afraid of change. They don't like to make changes in themselves. They hide their flaws. They are indecisive. They do not have the power to to take some decisions, and they act like no. They said that they know everything, but they know nothing. They always make excuses. They blame others. तो इनसिक्योर लोग वो होते हैं जो कभी जज करते हैं हमेशा दूसरों को, जालस होते हैं और क्लोज माइंडेड होते हैं, कुछ भी नहीं सोचते, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, और हमेशा डरते हैं तब्दीलियों से, अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं करना चाहते, और अपनी गलतियों को छुपाते हैं, और अपने फैसले भी नहीं ले सकते, और वो इस तरह एक्ट करते हैं कि उनको सब कुछ पता है लेकिन उनको पता कुछ नहीं होता। वो हमेशा गलती एक्सक्यूजेस करते हैं, कहते हैं भाई हमने नहीं किया, ये यूँ हो गया, ये यूँ हो गया, मेरे पास टाइम नहीं था, ये हो गया। वो सीखते नहीं है, फिर वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Here we have, you are not the limited person you think you are. Any trained Buddhist teacher can tell you with all the conviction of personal experiences and rely you are the very heart of compassion, completely aware and fully capable of achieving the greatest good, and only for yourself but for everyone and everything that you can imagine. तो अगर आप अपने अंदर कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो आपको खुद मेहनत करनी है, आपके अंदर हमेशा जज़्बा होना चाहिए। आप फुल उस चीज़ के ऊपर काम करें, उसको सीखें, उसको समझें, उसके तरीक़ाकार ढूँढें, तो आपको ज़रूर आसान हो जाएगा वो। सो ऑल दिस इज़ फ्रॉम मी फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।